Namaskar. Hello and welcome to Pariksha Parv 4.0. I'm Shivani Mohan, your host from New India Junction channel, and I welcome you all to this special session of Pariksha Parv Talks. This session is being aired live for all our students and their parents on DD National, NCPCR and New India Junction YouTube channels. Pariksha Parv is a festival of learning. It is an endeavor to empower our future generations in such a way so that they blossom unhindered, so that also they reach their potential, optimum potential without any stress and anxieties. And we have had wonderful speakers from all fields of life who have come and shared their experiences with us here. Today, we have a very special guest who needs no introduction. She has won our hearts for years with her staggering performances, be it on television or cinema. Actor, writer, TV show host and producer Pallavi Joshi ji, who has carved her own niche in a career spanning 4 decades, I think. She is the recipient of accolades such as 2 National Film Awards, and in the recent hit, The Kashmir Files, she mesmerized us with a brilliantly essayed character of Radhika Menon. It gives me immense pleasure to welcome you, Pallavi ji. Thank you. It's a pleasure being here. So, I have been a big fan of yours right from the Doordarshan days. Starting with let's start with the Pariksha Parv. What do you think of this concept, and do you feel that when we were students these things were not there? I mean, we missed out on such concepts. Absolutely. When we were students, when we were kids, हमारे ऊपर इतना प्रेशर रहता था constant to perform और कोई support system नहीं था तब. Yes. And also I think we had only very limited career options in front of us. Yes. Career options नहीं थे, they were only limited careers. Career options तो बाद में शुरू हुए, आजकल optional careers पे हम लोग आ गए हैं, and I think this is a brilliant time. Yes. इतना ज़्यादा आजकल support मिलता है. Parents also, you know, they have started understanding that children can't be constantly studying and Yes. losing out on their childhood. True. We have a lot of shows which help the children. We have the Honorable Prime Minister is so invested in the Yes. children and their future. So I think this is the best time, you know, to be a student, to be a child. Yes, definitely. So take us back to your childhood and your school days. What kind of a student were you? Were you totally into studies or more of extracurricular? You could share with all the young students watching. I don't think I'm going to set a very good example if I speak about my childhood. Okay. I was not a very good student. Okay. Well, that happened later. Initially, I used to be very good in studies. I was extremely naughty. Okay. I used to get pulled out of my class constantly. I was, मतलब एक समय तो ऐसे हो गया था that the teachers would come inside, they would just look at me and they would say, Joshi, बाहर. even before the class started. Okay. Oh, wow. So extremely mischievous and मतलब teachers तो ऐसा उनको लगता था इस क्लास में ना जाए. अच्छा. But also along with that, I was pretty good with my studies, so teachers were still fine. पर एक समय कुछ ऐसा आ गया था, मेरे ख्याल से शायद वो लड़कियों की जिंदगी में जल्दी आता है. आप थोड़े से कहीं बड़े होने लगते हैं अपनी दिमाग में. जी. तो वो 9th, 8th, 9th, 10th का जो एक समय था, that time I started lacking behind. Okay. और मैंने बहुत बचपन में काम शुरू किया था जब मैं 5 साल की थी. तो एक वो भी थोड़ा सा था कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एक्टिंग में, और मैं उसी में खोई रहती थी पूरा टाइम. मैं पढ़ना चाहती थी एक्टिंग को लेके. मेरी माँ खुद सिंगर थी और वो गाना सिखाती थी, तो बचपन से उन्होंने हमें भी गाना सिखाया. तो इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मेरा बेंट ऑफ माइंड होने लगा. तो इसलिए कहीं पे थोड़ा सा पढ़ाई में मैं थोड़ी कमज़ोर होने लगी उसके बाद. पर ऑन द होल आई थिंक अगर एवरेज निकाला जाए तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट कहलाऊंगी. यू नो, फर्स्ट आई वाज गुड एंड देन आई वाज बैड.
So that also shows that, you know, your career and your success in life doesn't matter on just marks in school, you know. Exam are just one milestone, and there is so much more to do in life. So often when we take stress, we consider इसमें इतने marks कम आ गए ये वो, मतलब it doesn't matter in the long run, I guess. Not at all. मुझे ऐसा लगता है कि हम जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, जी. So जो बुक्स की पढ़ाई है वो तो एक तरह की पढ़ाई है, लेकिन साथ साथ हमें ज़िंदगी अपना जीवन भी बहुत कुछ सिखाता है. तो सबसे बड़ी सीख मुझे लगता है कि इस वक्त पे बच्चों को यही मिलती है कि फोकस कैसे करना है. आपको 100 में से कितने मार्क्स आते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने कितना फोकस करके वो पढ़ाई की है. आपका और वो फोकस आपको किसी भी काम में ज़िंदगी में आगे वो आपको रखना पड़ेगा फोकस, क्योंकि उसी से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो इसकी तैयारी आपको बहुत पहले से शुरू करनी होती है, और इसीलिए इंसिस्ट करते हैं कि बैठो पढ़ाई करो, ताकि आप अपना फोकस सही करना बचपन में ही शुरू करें. Okay, so now you said that you started acting at a very young age. So what were your initial experiences? I particularly remember that Katha Sagar, a few episodes I just can't forget. मैंने लिखा भी हुआ एक खुला हुआ दरवाजा, where you were a liar kind of a girl, and a cup of tea. So those are memorable. I still go to YouTube and watch those. So आपका favorite role या जो आपने इतने किए हैं आज तक, what would be yours? See, Katha Sagar happened after I grew up. I was in college that time. Okay. So मैं second year में थी शायद. बचपन में जो मैंने फिल्में की वो तो एक हॉबी के तौर पे निकल गई. Yes. और मुझे याद है कि जब मैं 9th में आई थी, तब मेरे पिताजी ने मुझे एक दिन बैठाया और पूछा मुझसे कि तुम करियर क्या करना चाहती हो आगे. Okay. एक्टिंग कंटिन्यू करना चाहती हो या कुछ और करना चाहती हो, तो उस हिसाब से हम एकेडमिक्स पे फोकस करें. Okay. तब मेरे मुंह से एकदम से निकल गया, मैंने कहा नहीं, मुझे एक्टिंग ही करनी है. दिस इज आई लव डूइंग दिस. तो ही सेड ओके, तो फिर हम लोग तुमको बहुत स्ट्रेस नहीं देंगे कि फर्स्ट क्लास आना है या डिस्टिंक्शन आना है, बस पास हो जाओ. Okay, इतना कर that's so देना. nice. So I said yeah, that don't worry, उतना तो मैं कर दूँगी. और उसके बाद ये जो सारे आप जो रोल्स कह रही हैं, जी. मैं सच बताऊं, ये बिल्कुल I don't think it will be wrong to say that I've enjoyed playing each and every one of them. And especially Katha Sagar was all based on short stories. Short stories, yes. So I got a chance to read O. Henry, Saki, True. Graham Greene. Yes. So I also grew as a person. I started, my learning, my reading habits became better. Absolutely. So for me, choosing this career Yes. and working with people like Mr. Benegal or Mr. Nilani Yes. was a great school for me, where I learned a lot. And with successive films and successive directors, my learning only grew. Okay. So मेरी जो भी learning है वो school और college से ज़्यादा मैंने अपने career में This अपनी is so learning true, because those stories inspired us to read. And I personally, pursued English literature later on because I was initially inspired by Katha Saga stories. So you can't imagine what an impact these things have. Now, I would like to ask you, does acting come naturally to you, or you have to prepare? We heard these terms, method actor. How do you prepare for a role? See, acting, has to come naturally. Okay. I mean, you need to have some understanding Yes. of the profession. But having said that, acting is also a craft. It's like music. Yes. So if you, अगर आप में सुर है, तो ही आप music सीख सकते हैं. जी. But only with that, knowledge of sur, you cannot become a singer. जी. You have to learn the craft. So उसी तरह से acting में भी you have to learn the craft. Okay. And there are challenges कि आपको रोना है, आपको हंसना है, चलते शॉट में ये करना है, चलते शॉट पे आंसू आने हैं. तो सबको ये लगता है that this is such wonderful acting, but no, that is not acting, that is a craft. Okay. Because we learn how to cry. Yes, yes. But having said so, even if it comes to you instinctively, you have to prepare for every character. And there is a very different preparation that goes with every different character. Okay. Now, there are a lot of children who have interest in other activities, and in India, we've always had this focus on
certain careers. So what advice would you like to give parents, whose kids want to pursue, say, so sports or even acting or any art? I mean, how to encourage and make sure that they don't lag behind in studies? Any tips you could give? I don't know if I should be giving tips, but I'll tell you what I have learned from my own experience. Sure. Both my children are grown up now. I had very seriously wanted them to do something different in their life and not just follow our profession, because it's very easy to follow your parents' footsteps, especially when they're famous. Yes. So I didn't want them to fall in this trap of glamour, fame, money. I wanted them to carve their own niche. So my son started playing cricket when he was 8 years old. Okay. And my daughter had great aspirations of becoming a gynecologist when she was a little baby. Oh, wow. Unfortunately, all that has bitten the dust and they are both in the same line now. Okay. But what my husband and I, we maintained from the very beginning was that it does not matter what line of career the children opt for. As long as they're happy doing what they are doing, they will succeed in life. Okay. And I think with today's generation, the kind of friends that my children have, एक कुछ भरोसा सा हो गया है मुझे इस generation पे कि वो गलत नहीं करेंगे कुछ. They'll carve their own niche. They are extremely confident. डिजिटल ज़माने के बच्चे हैं ये. हमने तो एनालॉग से शुरू किया था. बट और हम जब मतलब मैं 21 साल की थी और मेरे किसी दोस्त के जब बच्चे पैदा होते थे, हम कहते थे अरे वाह, इसको तो रिमोट ऑपरेट करना आता है. आज के बच्चे तो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, तो मिनट दे आर बोर्न, सो आईपैड पे गाने चला लेते हैं. सो दिस जनरेशन इज फार फार अहेड. द वर्ल्ड इज एट देयर फिंगर टिप्स, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट. So they know how to succeed, they know how to take life in their stride. And बहुत सारी चीज़ें बहुत कम उम्र में बच्चों को सीखने को मिल रही है. तो इसकी वजह से unless the parents are very very rigid कि हाँ इनको डॉक्टर ही बनना है या इनको इंजीनियर ही बनना है, तब तक मुझे ऐसा लगता है बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए. आप उनको दिशा दिखाइए कि आप किस तरह से, मतलब आपको लगा कि वो थोड़ा इस तरफ जा रहे हैं तो जेंटली टैप देम एंड ब्रिंग देम ऑन द राइट रोड अगेन. बट पहले के ज़माने में जैसे हमारे माँ बाप, मेरे नहीं पर हमारे जनरेशन के माँ बाप ने जैसे हमको मतलब बिठा के नहीं यही करना है तुमको, दैट डजंट वर्क एनीमोर एंड इन फैक्ट यू विल ओनली मेक योर चिल्ड्रन अनहैप्पी. सो इवन इफ दे चूज अ प्रोफेशन व्हिच इज नॉट गोइंग टू पे देम अ लॉट ऑफ मनी, see how happy they are going to be doing it. That also matters. So it's like in Bhutan, वहाँ पे जो इंडेक्स है उनका, वो happiness index सबसे ज़्यादा मानते हैं वहाँ पे. So I think that is an ideal gives you situation. satisfaction. But acting career also has its own stresses and anxieties, and how do you face those? If you could give us a little insight into that. Well, mainstream commercial cinema has a lot of stress. Okay. And I'm experiencing that stress now that I'm behind the camera as a producer, because your numbers have to, add up finally. देखिए I think stress and tension जो है वो हर profession में होता है, और nobody can escape that. Yes. And that is why we start very young. We start taking that kind of stress from our parents. Yes. As far as our exams are concerned. So we kind of equip ourselves right from the time we are 14-15 years old to deal with stress in life. तो जैसे जैसे बड़े बड़े stress आने लगते हैं, we are able to take it in our stride. Yes. Also, I think अगर आप ऐसे career में है where you're enjoying yourself, you're enjoying that work, the stress also kind of doesn't become very stressful, if I may say so. Yes. It doesn't give you sleepless nights because it's a part of your profession. Okay. जैसे unfortunately in cinema, every Friday आपका future decide होता है. Yes. Especially the leading men. Okay. तो आपकी एक फ्राइडे को फिल्म बहुत चली, ब्लॉकबस्टर हिट हो गई, तो आपका जो स्टार स्टेटस है वो कहीं का कहीं चला जाता है. यू स्टार्ट डिमांडिंग अ बिगर प्राइस. आपके पास बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स आएंगे, और वही एवरेज हो गई या फिल्म नहीं चली तो आपको एक सेटबैक आता है. देन वो
7-8 प्रोड्यूसर्स जो आए हैं उनमें से 4-5 ही रह जाते हैं. So ये every week का एक stress है, and it is extremely difficult to deal with it if you're not equipped and if you're not happy doing what you're doing. Yes, you know. So मेरे ख्याल से सबसे पहली बात तो यही है कि you have to be extremely satisfied and content with what you're doing. Sure. And because like I'm married to Vivek, who's also from the same profession. उसके दो एक फ़ायदा और नुकसान ये भी है, मैं ये भी सबको स्टूडेंट्स को बताना चाहती हूँ कि हम लोग इतना एंजॉय करते हैं काम कि हम 24 घंटे काम करते रहते हैं. So ये उसका नुकसान भी है, you know, कि हमारा काम कभी रुकता नहीं. But yeah, just जिंदगी एक बार मिलती है, and I think we should all have a happy life and have lots of fun in life. Stress अपनी जगह है, उसको भी हम लोग handle कर लेते हैं if we are happy. ठीक है. Now you've had a very long career, you know, and you've done very different things. So has there been sometimes failure also, and how you have handled it? If you could let us know, because in student life also sometimes, you know, you don't get the marks you want, and people can fail also, which is a reality. Then how should one take it positively? I'll give you a very current example. Ever since we did a film called Buddha in a Traffic Jam in the year, we shot the film in the year 2011. वो film release ही नहीं हो पा रही थी. Okay. Because there were no takers. Okay. Suddenly we realized that एक जो बहुत ही एक nice नैरेटिव जो एक हिंदी फिल्मों में चलता है, उससे हम कुछ और तो उससे हम लोग बहुत अलग निकल गए थे. We were talking about urban naxals in this film, and suddenly there were no takers. We lost a lot of friends. They stopped inviting us home. Wow. We had this huge group, everybody from the film industry. Somebody was a documentary filmmaker, musician, editors, directors, and suddenly we weren't invited anywhere. When we would call them, they wouldn't pick up our phones. तो इस उम्र में जाके ये बहुत बड़ा setback आपको लगता है that what wrong have we done? Yes. Suddenly, you know, if you're trying to put a story out, thinking, which is a truth, तो वो बहुत बड़ा झटका लगा था हमें. And because of that, there was nobody supporting us. No exhibitors were ready to take our films, and we took about 6 years to release that film. और वो भी एक ऐसी टेक्निकल रिलीज हुई for just a week. Okay. And then we realized that, you know, we have decided to tell a story, and there are no set rules. All these rules are man-made. Yes. So we can certainly change them. So we started taking, Vivek especially started taking the film to all the universities and started showing it to the students. Wow. That's where it started gathering support. Okay. And then finally we put it on YouTube. It is one of the most watched films on YouTube. Wow. And now Z has bought the film, Z5. So nice. So जो YouTube में film freely available थी, वो किसी OTT platform ने खरीद ली है. This in itself speaks, you know, volumes. Starting with that, people started thinking that there is no point casting Pallavi in the films anymore, you know, because ये तो कुछ अलग mindset के हैं या इनको काम नहीं करना है and stuff like that. So I stopped getting work. You know, I used to really miss you, and I used to wonder why aren't you there. So then I said, fine, if people are not giving me work, we'll write, you know, roles for me. So Buddha में मैंने किया था, then Tashkent I played a character, then Kashmir Files I played a character. So I said, if people are not giving me characters, I'll make my own characters, you know. That's so wonderful. This is also, I think, taking things in stride. So अगर आपको failure आता है life में, तो you always know कि there is something, you know, better waiting for you, and you shouldn't lose hope. And we kept pursuing. आज आप देखिए, it's been almost 12 years. Yes. And without losing heart, without losing hope, from Buddha in a Traffic Jam to Kashmir Files, it's been a very, very long and a stressful journey for us. But we knew that, you know, it's going to pay off finally, and look how people have accepted the Kashmir Files today. So did you ever lose hope on the way, you know, think of quitting? Or Not at all. Not at all. I think that is the whole idea. I'm a very optimistic person, A, and B, I think as a mother also, and a wife also, I couldn't give up. Yes. Because I knew that if I give up, everything is going to collapse. So I had to go on for the sake of my children, for the sake of my home, house.
So I'm sure all our viewers who are watching will draw a lot of inspiration from these. These are life lessons, I think. And another thing that you have always chosen a little offbeat, or say a lot of parallel cinema, and series such as Arohan and Alp-Viram, which created a different, genre, I would say. How was those decisions? I mean, and are you happy looking back at all those different roles you played, and kind of before, ahead of their time also? Right. You're talking about what I call the good old Doordarshan days. Yes, yes. See, when Doordarshan started, this was in 1985, another lifetime ago. But that time it was called sponsored programs. Okay, yes, if you remember. Yes, there used to be ads. Yeah. Ramdas Padhe with his, puppets. Bilkul. So उस वक्त में there was a lot of experiment that went with the television. Okay. And we had brilliant directors like Kundan Shah and Ketan Mehta and Sudhir Pandey, Govind Nilani, Shyam Benegal, Ramesh Sippy. Everybody was doing television and everybody was experimenting with television. Yes. किसी को पता नहीं था ये medium को किस तरह से देखना है, तो some treated it like film, some treated it like theatre. Okay. And जो stories फिल्मों में नहीं बता पा रहे थे, वो सारी दूरदर्शन पे आ रही थी. Okay. And therefore there were so many, it was turning out better. Turning out better, and the stories were ahead of their time. Yes, yes. So all the serials that you see, right from maybe Hum Log to Bunyad to Rajni Yes. to Udan, They to are our Arohan, childhood memories. Regnaini, I mean, Zindagi, there was some, that's Paresh Rawal wala. ये जो है Comedy, जिंदगी, ये जो है हाँ. जिंदगी. तो ये एक से एक, there was दर्पण, Yes, yes. and बहुत सारी थी, बहुत अच्छी. कथा सागर also जी, one of them. जी. तो इतनी सारी एक्सपेरिमेंट्स हो रही थी, इतनी सारी अच्छी अच्छी स्टोरीज आ रही थी बाहर, और that was one of the most enjoyable times, I Yes. think. And the whole family could sit and watch. That was also one Yeah. different thing of that era. और उसमें मेरे ख्याल से जितना औरतों के एम्पावरमेंट में Yes. उस वक्त पे काम हुआ है, True. उतना उसके Now, बाद नहीं हुआ. I'm very I think we are going back in time. but I don't know what's happened to Regressive. television today. But I was 16 years old when I got a call from Shyam Benegal's office to do a film with him called Susman. And that was like a turning point in my life. Okay. क्योंकि वहाँ पे I think the who's who of India's talent was there. Yes. There was Shabana Azmi, there was Om Puri, there was Ila Arun, Anita Kamal, Pankaj Kapoor. So talented, I mean, all of them. Everywhere that you see, looked, there was a great actor standing there. So उस वक्त पे मैंने बहुत कुछ सीखा. I mean, the way they would all sit together, वहाँ पे कोई starism नहीं था. They would all sit together, chat on various topics. They would speak on politics, they would speak on social problems, they would speak on international cinema, and all these topics were so new to me. क्योंकि हमारे यहाँ entertainment journalist, you know what kind of questions they always ask. तो आपने ये role कैसे चुना? How did you get this character? I mean, nothing really goes beyond that. But here there was so much brain feed suddenly. Yes. तो मैं हमेशा यही सोचती हूँ that instead of Mr. Benegal, had I been called by Subhash Ghai to do a film that time, maybe my life would have been different today. I would have walked a different path. So आपकी सबसे ज़्यादा जो impressionable age होती है, उस वक्त पे आपको कैसे influences आते हैं, उस पे बहुत depend करता है. Okay. And I think that is where, because वो वही age होती है, 9th, 10th, 11th types. So that time parents are very, how do you say, aware Yes. that what kind of friends and what kind of company the children are keeping, because that is probably going to decide the path of their life. Okay, sure. Now, you have also worked in different mediums like theatre, TV, film. If you could tell us what are the different, stresses in each, and how do you handle, and which is better, which is preferred by you? Well, nothing is better. One is worse than the other, actually. Okay. But I'll tell you the highs of each profession first. Yes, sure. Theatre is immediate gratification because you have a live audience, and while you are performing, आपको immediate response मिलता है सामने से. So with every show, you can do better and better because you know, okay, these are the places where
you know, audience responds better. Okay. और यहाँ पे नहीं कर रही है, so these are the areas that you need to focus on. So every single act of yours, you're consistently growing as an actor. Okay. And that's why the theatre actors are so, you know, looked Yes, upon. yeah. Because they're constantly honing their skills, they're constantly trying to, you know, take a step Better, further yes, within the sure. same character. As far as television is concerned, I'm not talking about the good old days, I'm talking about the current scenario. We only have daily soaps today. Yes. Back in those days, weekly shows हुआ करते थे, तो 4 episode महीने के होते थे, उसके लिए हम very typically we used to shoot for about 12 to 16 days. Yes. Today, anything between 24 to 26 episodes are telecast in a Yes. month. Okay. And you get that's less than huge 1 day. number. Less than 1 day to shoot. तो एक तो बहुत ही ज़्यादा creatively cramp हो गया है सब कुछ. And there are 2 to 3 units working simultaneously. So an actor from one setup has to run to the second setup, run to the third setup. That's why we've heard of you know, stories like actors fainting on sets. Yes. Dehydration हो जाता है उनको, they need to be rushed to the hospital. That's because of the sheer madness of the hours. Okay. And there is television, unfortunately, is not regulated. 12 hours you work at a stretch, but beyond that it's anything. Okay. तो आप काम करते ही रहते हैं. Sometimes we work 24 hours also. My God. So doing that in a time of, you know, जब बहुत ज़्यादा आपको you're falling behind, तो एक आध दिन करना ठीक है. But on television you're constantly on air. Constantly, तो वो constantly रहता है. And that is a very, very big setback. कि you have to compromise with your health. But the high is that, you know, you go everywhere. Every People day, recognize you constantly. You're a big star. You're a bigger star than movie stars Movies today. also? Okay. And cinema, I think, is the eternal thing. Cinema, nothing can beat cinema. The high of first prepping for it, shooting the film, seeing your own work on that big screen, which is larger than life, having a dedicated audience, buying tickets and coming to the hall. Yes. And doing nothing else. ऐसे नहीं कि आपको भिंडी काटते हुए जैसे घर पे देख रहे हैं वैसे देख रहे हैं. They're watching you. They've come to watch you. It's a dedicated audience. So there is no bigger high than films. But then, as I told you, कि जितना आप जल्दी ऊपर चढ़ते हैं उतना ही जल्दी नीचे गिर भी जाते हैं. So are you exploring digital medium also now, like YouTube and all? Like Digital, you posted that film. as you mentioned. We have our own channel also, and we do a lot of online stuff. But as far as OTT is concerned, we haven't really gone down that road yet, because उसमें भी बहुत there are different set of and there are too many ways. clearances, you know, to be taken. So I don't know if creatively I'm at that space to do it anymore. My personal grudge as a parent is that, you know, a lot of language, very bad language is being used constantly on OTT. I don't know whether it's a prerequisite or why do they do that? No, it's certainly not a prerequisite. I think what we do is we just try to ape the West all the time. Yes. And this is one thing I've always, you know, necessarily told my children, that you can be as modern as you want. You don't have to become Western. Yes. You don't have to, you should not forget your culture, your roots, where you come from, your own country. We are Indians. Yes. और हमारी जो संस्कार हैं वो हमारे हैं. अगर हम किसी के पैर छूते हैं तो उसमें बिल्कुल कुछ छोटा मानने की जरूरत नहीं. हमसे जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना हमारा कल्चर है. तो वो करना ही पड़ता है. तो उसमें आप वेस्टर्न ऐसे मत हो जाओ कि ओ हाय ब्रो, ये मत करो वहाँ जाके, you know. Okay. So be as modern as you want Yes, to, yes. but you still have to be Indian. Keep your integrity. So a lot of viewers have joined us. You can send your questions to Pallavi ji and she'll be happy to answer all the students and parents. Now, next I would like to ask you that you've been a mother of 2 kids, you are a mother, and was there any time when you felt stressed out as a parent, any time related to their studies or exams, and how have you coped? Because you've been a working person throughout also. I haven't been stressed at all. Okay, that's so nice to know. Because I was of the opinion that, as I told you, for me it was more important that my children be happy in life. And I never wanted my children to miss out on their childhood. Because what happens is,
हम बहुत पहले से बहुत एम्बिशियस हो जाते हैं अपने बच्चों को लेके, एंड वी प्लान सो मेनी थिंग्स फॉर देम दैट राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर 4th or 5th grade वी सेंड देम फॉर ट्यूशंस कि नहीं इस मैथ्स में थोड़े कच्चे हो, साइंस में थोड़े कच्चे हो, ट्यूशंस ले लो। और वो जो खेलने का समय होता है उनका, या सुबह का जो फैमिली का समय होता है कि जब आप माँ पीछे पड़ती है, ब्रेकफास्ट खा लो, दूध पी लो, दैट इज ऑल्सो अ टाइम विद द फैमिली, विच नॉर्मलसी भी तो चाहिए बच्चे के लाइफ में। तो वो कहीं पे वो खो देते हैं बच्चे, एंड बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बोझ आ जाता है उनके ऊपर। सो आई knew that I am not going to stress my kids over this. So good to know. And my kids did very badly until the 8th standard. और मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था कहीं पे कि मैंने कहा आगे होगा क्या इनका। And I always used to keep saying that, as my father had told me, कि बस तुम पास हो जाना। I used to keep praying कि भगवान किसी तरह इनको पास कर दो, बस मेरी नाक ना कटाओ, that's all. But ठीक है, when they gave their बोर्ड एग्जाम्स आई वाज प्रिपेयर्ड। मैंने कहा यहाँ तो विकेट जाने वाली है, तो गई, अभी क्या है, यू सपोर्ट योर चिल्ड्रन, ठीक है, they learn from their failures. But what my daughter did amazingly, and my son followed the same thing, it was after her prelims. तब तक कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ टेंशन दी है दोनों पेरेंट्स को। उसके बाद उसने जाके मुझसे कहा कि Mama, how much should I get? How much do you expect? मैंने कहा I don't expect anything. I just want you to clear your boards. तो कहती है I will clear my boards. I'll get 80%. Okay. मैंने कहा you're mighty confident. भैया अगर 80% मिल जाए तो मैं तो पूरे मोहल्ले को पार्टी दूंगी। तो she said 80%. And then she went and wrote 80% on every single wall of her room. Wow. बाथरूम के शीशे पे लिख दिया, अपनी अलमारी के अंदर लिख दिया, सारे बेड साइड पे उसने एक अपना वो छोटा सा बोर्ड रखा था, सुबह उठते साथ उसको 80% दिखता था। So she kind of psyched herself. Yes. And that girl got 81% in Wow, that's so nice. And I was so amazed कि मैंने तो जाके प्रिंसिपल को बोला, do you want to recheck the papers? Because I don't know if she is capable. But she did that. Yes. And I think she took it up as a challenge. और जो लड़की बिल्कुल पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देती थी, वो अगर 80% ला सकती है तो ये जनरेशन कुछ भी कर सकती है। And my son did the same thing. He said I'm going to follow her example. तो उसके बाद खैर अलग बात है कि मुझे रूम दोबारा पेंट करनी पड़ी क्योंकि परमानेंट मार्कर से सब जगह लिख के रखा था उन्होंने। He also did the same thing. He wrote 83% everywhere. और उसको 82% मिल गए। So I mean that was amazing. Wonderful. फिर उसके बाद मैं उनके पीछे नहीं पड़ी, मैंने कहा चलो 12th ग्रेजुएशन जो भी है, I know that you'll be able to do it. So आप छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से बच्चों को they might just surprise you. And I think it also shows the power of affirmation, when we say that we will achieve something, that determination, that is more important than sticking to a certain timetable. Or I mean, do you believe in timetables? You just mentioned that. I believe in timetable because I'm old school. My children don't. Okay. मैंने बहुत बार खुद बनाए उनके लिए timetable, जैसे follow this timetable, कुछ नहीं होता. They don't follow it, but उनका एक कुछ अपना है. My son and daughter are as different as chalk and cheese. That also happens, हाँ, so. My son is very regimental. Okay. वो सुबह उठेगा, अपना सबसे पहले कुछ he'll have some shake, okay. and then वो जिम चला जाता है. Okay. Then he comes up, वो उसका special diet है, मुझे इतना प्रोटीन खाना है, ये करना है. After that he goes to our office, फिर पूरा दिन काम करता है. शाम को then he says this is friends time. फिर रात को आता है वापस, फिर डिनर भी उसका जो इतना ही पोर्शन खाएगा. My daughter gets up जब उसकी आँख खुलती है तब उठती है. Okay. लेकिन और उसके बाद मुझे आज तक उसका टाइम टेबल पता नहीं चला है क्या है, लेकिन वो करती सब है. She accomplishes everything. जो भी मैं उसको जॉब्स देती हूँ वो सब करती है. That's what matters. That's what I think matters at the end of the day, and I've realized that उसके पीछे पड़ के कोई मतलब नहीं है. अगर मैं उसको कहूँ बेटी 8 बजे तक तो उठा करो, वो नहीं मानने वाली है मेरी बात. But then as long as she's getting the job done, that's perfect. How does it matter? True. Now, do you look at film also as a way of education, and does your education help in films? I mean, does one have to be highly qualified to make meaningful films, or how does that work? See, I'll tell you, education helps in every profession.
आप ने कुछ भी पढ़ा हो तो कहीं पे भी वो आपको काम आएगा। ये तो सत्य बात है, मतलब एक की पत्थर की लकीर है। लेकिन आपने सिर्फ पढ़ाई करके ही किसी भी प्रोफेशन में आप नहीं जा सकते, उस प्रोफेशन के लिए आपको स्किल भी डेवलप करना पड़ता है। तो कई बार जो लोग जिनको एजुकेशन नहीं मिलती है, प्रॉपर एजुकेशन, वो अपना स्किल डेवलप करके भी बहुत कहीं के कहीं पहुंच सकते हैं। तो ये दिस आंसर इज बोथ yes and no. Okay. Education I think is very important for your personality, for your growth in life in general. लेकिन as far as films are concerned, it has got nothing to do with science or math or geography. Of course it will help अगर आपने मतलब आपको कहा कि दुबई में शेड्यूल है और आप साउथ ईस्ट में अगर दुबई ढूंढने लगे तो फिर तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लाइफ में। But what was the question you asked? If it helps, education helps. I mean, what kind of education? So that kind of sums okay. up. And the films that you make, do you feel that they should educate the audience, or you believe in entertainment? Because I think Kashmir Files, the most recent, educated a lot of people about certain things. My outlook is that cinema needs to have some takeaway. मतलब आपको अगर इतना बड़ा बनाया है आपके ऑडियंसेस ने, तो यू हैव अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो विच यू कैन नॉट फॉरगेट। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर फिल्म में कुछ आपको कुछ सोशल मैसेजिंग की ही ज़रूरत है, नहीं। सम फिल्म्स आर मेंट फॉर प्योर एंटरटेनमेंट। जैसे अगर आप एक लव स्टोरी बना रहे हैं तो आप एक लव स्टोरी दिखा दो उसको एक अच्छे इस पे, द बॉय मीट्स गर्ल्स एंड देन दे वॉक हैंड इन हैंड इनटू द सनसेट, it's fine. I mean, it's like a nice romantic story. एक वो feel good तो आपको मिलता है ना when you're coming back, coming out of the theater. तो मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि आप जो बना रहे हैं वो आप honestly बनाइए। उसमें जब आप manipulations शुरू करते हैं, उसमें जब आप अपनी पंडिताई दिखाना शुरू करते हैं कि ये देखो ये हूँ मैं, तब ऑडियंस भी भाग जाती है। और जैसे ऑनेस्टी हम लोग जब when we are doing theater, तो जितना लाइव ऑडियंस होने की वजह से जितने अच्छे से वो ग्रास्प कर लेती है आपकी ऑनेस्टी, वैसे ही फिल्म ऑडियंस ऑल्सो ग्रास्प द ऑनेस्टी ऑफ द मेकर्स एंड द एक्टर्स ऑल्सो। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और वो हर आदमी को, औरत को रखनी चाहिए, चाहे वो फिल्म मेकर्स हो, एक्टर्स हो, टेक्नीशियंस हो, कोई भी हो। And what are your views on depiction of women in films and even television and the stereotypes that we see? You have always tried to break away from them, I think. Unfortunately, you mentioned about Arohan something recently. You see, unfortunately, what happens is that we in India look at feminism from a Western prism. The truth about the Western society is completely different from our Eastern ways of living, you know. Yes. और हमने कहीं पे, हमें ऐसा लगता है कि empowered woman का मतलब है you have to stand from the rooftops and shout and tell everybody, look, I've broken the glass ceiling. वो it doesn't work that way. आप बहुत ही क्या कहते हैं, dignified हो सकते हैं, आप कम बोल सकते हैं, आप बहुत संस्कारी हो सकते हैं और फिर भी आप एम्पावर्ड हो सकते हैं, बिकॉज आपकी स्ट्रेंथ तो अंदर है, वो बाहर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ औरतें होती हैं वैसे, मुझे उनसे भी कुछ, आई एम नॉट जजिंग देम, बट सारी औरतों को वैसा होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू लुक एम्पावर्ड, यू नो। तो हमारे यहाँ पे जिस तरह से देखा जाता है वो वापस वो वेस्टर्न आईने से ही देखा जाता है। हमारे यहाँ पे कभी भी आप अपने पुराने शिल्प देख लीजिए, हमारी पुरानी पेंटिंग्स देख लीजिए, हमेशा हमारे औरतों को कभी उसमें हमने कपड़े पहनते हुए नहीं देखा है, या तो बहुत कम कपड़े हैं, लेकिन जो ब्यूटी आती है उसमें, उससे आपकी गलत नजर कभी नहीं जाती। Yes, it was very progressive, I think, right from the beginning. तो हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ के कॉन्सेप्ट्स भी देखिए, क्या अर्धनारी नटेश्वर हम कहते हैं, तो यिन एंड यांग का कॉन्सेप्ट तो ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है ही, वी ऑलवेज हैड दिस। तो शिव और शक्ति हम कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो जब ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा इक्वालिटी का ही कॉन्सेप्ट है, तो हम और औरतों को उस तरह से क्यों प्रेजेंट करते हैं कि हम
उनको कहीं पूरी सोसाइटी एक हीन भावना से देखने लगे, उनको ऑब्जेक्टिफाई क्यों करते हैं हम लोग। हाँ, एक हाथ फिल्म में कर दिया, मैं समझ सकती हूँ, वो सब्जेक्ट का हाँ वो सब्जेक्ट की डिमांड है कि उसमें ये औरतों का किरदार दिखाना ही ऐसा है। जैसे आपने गंगूबाई बनाया, उसमें आप कैसे दिखा सकते हैं कुछ, तो वो मैं समझ सकती हूँ। लेकिन जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आप एक आइटम सॉन्ग होगा और उसमें बहुत कम कपड़े आप औरतों को पहनाएंगे जस्ट टू गेट अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस इन, तो मुझे ऐसा लगता है यू आर ऑल्सो helping a certain kind of audience grow in this country, which is unnecessary. True. So I'm so glad that there are the flag bearers of other kind of cinema. No, of course, and I think inspirational subjects are what we have to look at. Yes, definitely. जैसे आपने आरोहण mention किया, I would like to say that here. मैं नाम भूल गई हूँ अभी, but I just read the news this morning. There is a lady who has become the captain of a merchant navy vessel now. Wow. And I just read her interview online this morning, and she said when she was a little kid, she watched my series Arohan, जिसमें 3 लड़कियां इंडियन नेवी ज्वाइन करती हैं, and she was so inspired by it that she wanted to go and join NDA. पर वो 12th के बाद तब लड़कियों को अभी मेरे ख्याल से शुरू हुआ है, या अभी ग्रेजुएशन के बाद है, आई एम नॉट वेरी श्योर। बट अभी एटलीस्ट मेन कॉम्बैटिंग में औरतें थोड़ी सी दिखाई देने लगी हैं हमारे मिलिट्री फोर्सेस में। पहले तो बहुत ही फ्रिंज प्रोफेशंस में थी, बट आई फेल्ट सो हैप्पी रीडिंग दैट आर्टिकल दिस मॉर्निंग कि इस तरह की इंस्पिरेशंस अगर हमारी औरतें ले रही हैं इस सोसाइटी में, दे आर मेकिंग अ नेम फॉर देमसेल्व्स, अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स. I'm so proud of them. Even this Pariksha Parv series, I've been interviewing a lot of young women from the interiors, from villages, and there was a Mount Everest scaler yesterday. She was then there was one girl who has discovered an asteroid. So it's so heartening to know. So if any more tips, the exam warriors is our concept. We are trying to create exam warriors instead of exam warriors. So if you could give some more practical tips, how to become exam warriors to our kids. Well, this is again, these are my views. I think this exam warriors, दिस इज़ अ लवली बुक. मैंने अभी थोड़ा सा देखा है इसको, ऑल्दो मुझे ये पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है. लुक, इसका जो फॉन्ट है और इसका जो पूरा कलर्स वगैरह है अंदर, इट इज़ जस्ट मेकिंग मी वांट टू रीड इट राइट नाउ. बट एज यू करेक्टली सेड शिवानी, एग्ज़ाम वॉरियर्स नहीं, वॉरियर्स बनना है हमको. उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, मैं अभी बच्चों को ये बात बताना चाह रही हूँ, आपने अपने माँ बाप को काम करते हुए देखा होगा. कभी कभी वो काम करते करते सडनली उठ जाते हैं और कहते हैं आई नीड अ ब्रेक, मैं बहुत थक गया हूँ. अभी बाहर बालकनी में चले जाते हैं, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, किसी से कुछ करते हैं. कभी कभी खाना बनाते हुए, आप जो भी आपके पेरेंट घर पे खाना बनाते हैं, वो खाना बनाते बनाते बाहर निकल आते हैं, बहुत गर्मी है, मैं 5-10 मिनट ज़रा बैठ जाता हूँ यहाँ पे या बैठ जाती हूँ, एंड देन दे गो बैक टू द किचन. सो एवरीथिंग दैट यू डू, आपको उसमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है. और आप जब ब्रेक लेते हैं तभी आप फोकस बहुत अच्छे से कर सकते हैं. आजकल तो कॉरपोरेट लोग जो कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, उनको भी कहा जाता है कि भाई हर 10 मिनट के बाद ज़रा एक चक्कर मार के घूम के आओ, तो आपकी पीठ में दर्द नहीं होने लगेगा. तो आपको भी ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है. और नाउ आई वांट टू टेल द पेरेंट्स कि अगर ब्रेक लेके बच्चे कुछ अगर इंटरनेट पे कुछ सर्फ करते हैं, जब तक वो कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज़ नहीं देख रहे हैं, तब तक लेट देम डू दैट. वो एग्ज़ाम और पढ़ाई के फोकस से उनको बाहर निकलना 10-15 मिनट के लिए बहुत ज़रूरी है. वो जब निकल जाएंगे, दिमाग फ्रेश हो जाता है एकदम से, और फिर वो 1-2-3 घंटे जो भी उन्होंने सोचा है, जितना भी पढ़ेंगे, वो बहुत फोकस के साथ पढ़ पाएंगे. बट दीज लिटिल ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ इज़ फुल ऑफ दीज लिटिल ब्रेक्स. हम लोग कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत हम बड़ी बड़ी मेमोरीज बना सकते हैं. तो छोटी चीज़ों में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है. हम सिर्फ उन्हीं को थोड़ा सा निगलेक्ट कर देते हैं. तो छोटे ब्रेक्स लीजिए, थोड़े गाने सुनिए, थोड़े कुछ झूमर देखिए, कुछ एक आध एपिसोड कुछ 10-15 मिनट का आप देख लीजिए, पूरा निकाल दीजिए दिमाग में से, एंड देन कम बैक विथ अ वेरी वेरी फ्रेश अप्रोच. आप देखिए, आप बहुत अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे. एंड इफ़ यू आर फोकस्ड, देन आगे सक्सेस तो आप ही की है. That's so nice to know. Now you've also been very multifaceted, like you're a writer too,
And do you think it's important to develop all these different, talents in us? And what do you like to do to, See, unwind? if you're in a profession which you enjoy, आप अपने आप उसमें grow करते जाते हैं, आप अपने आप expand करते हैं. मान लीजिए मैं अगर आज कोई एक डेस्क जॉब कर रही होती, तो वो मेरी नहीं है रुचि उसमें बिल्कुल, तो मैं शायद अभी तक रिटायर हो चुकी होती कि नहीं मुझे काम नहीं करना है, मैंने छोड़ दिया होता, तो उसमें मेरी ग्रोथ संभव ही नहीं थी. लेकिन बिकॉज आई केम इनटू अ प्रोफेशन व्हिच आई रियली एंजॉयड, आई स्टार्टेड एक्टिंग, देन आई थॉट ओ आई मस्ट राइट, you know, because this is a natural extension of me being an actor, so I started writing. Then I thought I must produce, because then I'll be able to tell the stories, the kind of stories that I want to tell. So I became a producer. ऐसा करते करते then I started, you know, even singing for my films. So I think you keep extending yourself and you keep growing in the profession that you really enjoy. And that's why it is very important. अगर मल्टीफैसेटेड कोई है तो वो नेसेसरीली वो एंजॉय करता है उस काम को, इसीलिए वो बंदा या बंदी उसमें है. इतना तो पक्का है. एंड अनवाइंड कैसे करते हैं हम लोग? एज आई टोल्ड यू, हम लोग है ना ब्रेक लेते ही रहते हैं पूरा टाइम व्हेन वी आर वर्किंग, एंड बिकॉज वी एंजॉय दिस वर्क सो मच तो 24/7 उसी में रहते हैं. हमारा काम ही है कि हमें गाने सुनने पड़ते हैं, हमें चीज़ें पढ़नी पड़ती है. सो हर वो चीज़ जो लोग अनवाइंड करने के लिए करते हैं वही हमारा काम है. And particularly, I love the song you sang, that Hum Dekhenge. It has been sung by Pallavi ji herself, if anybody doesn't know. Okay, so you've also worked very closely with students through your foundation. If you could tell us a little bit about that. Right. हम लोग we run a foundation called I Am Buddha Foundation, and what we do is normally a lot of NGOs focus on education, focus only on children. What we do is we focus on creativity. Okay. So we like to take the students who have a creative bent of mind, who have very natural talent of either becoming a writer or an editor or a director. I mean, ये तो सिर्फ movies के बारे में हो गया, but a painter, a sculptor, or a sand artist, what you may have. और we try to hone them and एक किसी project में उनको डाल देते हैं from where they can, you know, seek their own paths ahead. We also at the same time offer scholarships through our organization to people who are doing very very creative work. तो जैसे हमने अभी कश्मीर फाइल्स फिल्म की, तो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है भोपाल में, तो उसके 5 स्टूडेंट्स को हम लोग 5 साल के लिए वी ऑफर्ड देम स्कॉलरशिप वर्थ अबाउट 15 lakhs. Wonderful. एंड जिसमें से 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के होंगे. And anything that they do on Kashmir, may it be the culture of Kashmir, the literature of Kashmir, the music of Kashmir, उसमें जो भी वो करते हैं उनके लिए वो scholarships हम दे रहे हैं. So necessarily I Am Buddha Foundation is tying hands with children, with students who are creative and who want to do something in the creative profession. So I wish all of you all the best, and even if you're not in a profession where song, dance, music or writing is required, even then always tell yourself that you're extremely creative, क्योंकि कुछ ना कुछ creativity आपके अंदर ज़रूर है. आप उसके ऊपर focus करिए, और जो भी करियर आप चुने, आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, लॉयर बने, जर्नलिस्ट बने, जो भी बने, एक क्रिएटिविटी अपने अंदर हमेशा रखिए, and that will be bring a great sense of relief to you whenever you're stressed. Okay. Now we're getting some questions from the audience. We've got a question. What if the child tells that she is nervous because of not being prepared for the exams? How should parent react to this situation? कभी-कभी बहुत अलग तरह की ऑडियंस आती है, तो इवन वी डोंट नो हाउ टू रिएक्ट. तो हम प्रोफेशनल्स होने के बावजूद हम भी नर्वस हो जाते हैं. तो स्टूडेंट्स तो बिल्कुल, मतलब वो तो बच्चे हैं अभी, तो उनको नर्वसनेस तो फील होगी ही. उसमें all you have to do is just make them feel at ease.
अगर अनफॉर्चुनेटली इफ दे आर इल प्रिपेयर्ड, इवन देन तब उनको डांट के कुछ बोल के कुछ नहीं होगा, तो जितना जानते हैं उतना भी वो बेचारे भूल जाते हैं. तो सबसे पहले तो उनको बहुत कंफर्टेबल करना ज़रूरी है. सेंड देम फॉर देयर एग्जाम्स. और अगर वो इफ़ दे थिंक विथ अ लॉजिकल माइंड, इफ़ दे आर कूल, इफ़ दे आर नॉट स्ट्रेस्ड, तो जो उन्होंने पढ़ा है वो उनको याद भी आएगा. वरना उस नर्वसनेस में भूल भी जाते हैं बहुत सारे बच्चे. सो इट्स आई नो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि पेरेंट्स भी इतने इन्वॉल्व होते हैं कि वो भी, उनके भी नेचुरली इमोशंस निकलने लगते हैं. बट आई थिंक वी नीड टू फोकस ऑन द स्टूडेंट्स हियर फर्स्ट. Sure. Another question, how can parents help their child if they feel their child is disorganized? Disorganized in what way? Children are always disorganized. Maybe messy room or something like that. Oh my God, that is, I think you have to live with it. Okay. Let them be. Keep telling them that this is not the way to go. लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, that is lot of children find, you know, they are organized in their disorganized state. Yes. मतलब मैं कभी-कभी जाती हूँ अपने, जब बचपन में बच्चों के कमरे में, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, but they knew exactly what was kept where, even in that chaos. Okay. So sometimes there is organization in chaos also. Chaos, some order in disorder. Okay. One more question. When parents compare their child with other children, how it can affect the child? It affects the child. In just one simple sentence, it affects the child. आप अपने दो बच्चों को भी एक साथ जब कंपेयर करते हैं तब भी it affects them, because every child is born unique. हर बच्चे में कुछ कमियां होती हैं और कुछ अच्छाइयां होती हैं. और जैसे मैंने, if you've seen this program from the beginning, as I told you how different my two children are. Yes. तो अगर मैं उनको compare करती हूँ, if I tell my daughter, look how organized my son is, and you should, you know, learn from your brother, तो obviously उनके आपस में झगड़े ही होते रहेंगे. तो while it is good to point out certain good things, that you know, oh this, but then there is a way of saying. So we should praise them for We what should is praise good them. in them. But like I tell my daughter that, oh, you know, Manan did this yesterday, and I was so proud of him. Okay. And then she feels proud of him, because he's after all her brother. She says, "हाँ." तो मैंने कहा, मल्लिका, तुम ये, you should, you know, take that quality from him. It's a very good quality. तब उसको समझ में आता है. But if I tell her that, look at Manan and look at what you're doing, तब तो कुछ नहीं. Then that is the end of the road. So I think that's such a good tip, you know, the way you put it in a positive manner rather than criticizing directly. That would be better. Another question, what is the role of parents in child education? There are some parents who criticize something similar, but child do not praise when, but they do not praise the child when they achieve something. What would you like to suggest to such parents? You know, there are different types of parents and there are different types of upbringing. Now you cannot compare one to the other. कुछ घरों में ऐसा होता है, जैसे in my you know, my in-laws, they never praise anyone. Okay. जैसे बच्चे आएंगे सामने तो कहते हैं, अरे कैसी शक्ल लेके आई हो. Just when they actually want to say कि बहुत सुंदर लग रही हो. But you know, it's their way of saying because they feel कि नजर नहीं लग जाए. हम लोग कुछ अच्छी बातें करें तो ये कुछ अपना कल्चर भी है. हर फैमिली तो अगर है वैसे आपका घर का कल्चर कि आप अपने बच्चों को ज्यादा प्रेज नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि बिगड़ जाएंगे या व्हाटएवर, तो देन आपके बच्चों को फिर उसकी आदत होनी चाहिए शुरू से. तो बच्चों को भी उस बात से फर्क नहीं पड़ता फिर. लेकिन हाँ, सडनली आप उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं और आप फिर उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई पेरेंट्स ऐसा करते हैं. तो हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए अच्छा ही चाहता है, एंड पेरेंट्स नो देयर चिल्ड्रन बेस्ट. तो पर ये ज़रूर है कि जैसे हम, यू नो, इट्स अ वेरी कॉमन saying, not saying but a very common thought, कि आपके घर में अगर पौधे हैं तो आप उन पौधों से बातें कीजिए तो वो ज़्यादा फलते हैं. और ये मैंने एक्सपीरियंस के साथ, मैं तो गाती रहती हूँ अपने पौधों, पानी जब देती हूँ उनको तो मैं गाना गाती हूँ और बहुत अच्छा ब्लॉसम करते हैं मेरे घर पे. So nice. I think I need to do that. तो कोई भी चीज़ ना पॉजिटिविटी से ब्लॉसम करती है. तो आप जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने बच्चों के लिए क्रिएट कर सकते हैं, उतना ही वो फलेंगे फूलेंगे, उतना ही वो अच्छा काम करेंगे जीवन में भी. तो थोड़ी बहुत अगर हम प्रेस कर देते हैं उनकी,
that आप अपनी तरीके से करिए, even if you don't want to praise, you said okay, you did well. इतना भी कहिए without a smile, the child will understand that my father is extremely proud of me. So that message has to be conveyed to the child, even if you don't say it in so many words. And I think so everything, आपको जो करना है, ये disorganization का भी आपने जो पहले बोला था, every single thing can be, sorted said in a very positive way. But the only thing I would say is that if your child is doing 80 things out of the 100 things expected, then don't go after the child for doing those other 20 things. तो maximum चीज़ें अगर वो सही कर रहा है बच्चा, तो 2-4 चीज़ें छोड़ दो, वो हो जाएंगी, अपने आप हो जाएंगे. हमें कितने साल लगे थे? I used to be such a disorganized person in life. तो मुझे अभी भी मैं करती हूँ. Sometimes when I'm sure you do that. हम लोग 4-5 कपड़े तो पहन लेते हैं जाने से पहले बाहर के, है ना? नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक नहीं लग रहा है, और वो पड़े रहते हैं. और हमको अच्छा ठीक है, हमारा क्या है एक्सक्यूज कि हम बिजी हैं, तो वी डोंट हैव टाइम फॉर कह के वापस रखने के लिए. हमारे पास समय प्रायोरिटाइजिंग आवर वर्क. अब अगर उनको ठीक करने लग जाएं तो लेट. सो दे आर आल्सो प्रायोरिटाइजिंग देयर लाइफ, दैट्स व्हाट चिल्ड्रन आर सपोज्ड टू डू, सो लेट देम डू इट. That's so true. Okay, one last question from the audience. A child studying all the time without taking a break, how it can affect a child, and how can the parents help if something like this happens? I think you should encourage the child to take some breaks, because बहुत ज़्यादा उसमें अगर constantly आप उसी एक चीज़ में अगर रहते हैं, तो उससे कभी कभी कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं विदाउट रियलाइजिंग. आपका थोड़ा सा एक कहीं नेगेटिविटी भी अंदर आ सकती है आपके, क्योंकि एक ही एक चीज़ अगर आप 24 घंटे करते हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर इमोशनल वेलबींग ऑल्सो. तो यू शुड एनकरेज द चाइल्ड टू टेक लिटिल ब्रेक्स. एंड अगर नहीं ले रहा है ब्रेक आपका बच्चा, तो कुछ you should try and dangle some carrot in front of them. Okay. जिससे कि वो breaks ले, but breaks लेना बहुत ज़रूरी है. Okay. Now something related to fitness and diet. What is the importance of that in a student's life or any professional's life? I think the children ought to eat everything. उनका yes, nutrition is very important. कि वो मतलब junk सिर्फ ना खाए, लेकिन उम्र ही ऐसी है वो कि आप जो भी खाते हैं पच जाता है, क्योंकि वो खेलते कूदते इतना है, तो जब तक आपके बच्चे की कोई ऐसी ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, तब तक आई थिंक जस्ट लेट देम बी. क्योंकि आजकल आप दुनिया देख रही है कैसी है, आपको तो सब जगह इफ़ यू हैव टू फिट इन, तो आपको तो हेल्थ और न्यूट्रिशन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा. जब पूरी ज़िंदगी जो चीज़ करनी है वो बचपन में क्यों करवाए बच्चे से, जस्ट छोड़ दो उनको खुला कुछ दिनों के लिए. So I think that's been such a wonderful conversation and a message to all our parents that if your child is talented in a particular art, let them be. There are careers, which are away more than the studies. Nurture their talent and they can make big in any field. And I think Pallavi ji is the best example. The way she has lived her life with, the moderate, I think, thinking, no extremes. No extremes. ना आपके पेरेंट्स ने आप पे प्रेशर डाला और ना ही आपने. नहीं, हाँ, और हैप्पीनेस कोशेंट सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए. When your child is happy, a happy child will make a happy world. So nice. That's a wonderful note to finish on. Thank you so much, Pallavi ji, for joining us, and thanks to all our audiences who have joined us. Keep watching this series of Pariksha Parv 4.0. This will go on till 31st of May. Thank you for watching. Namaskar.